Good morning, students. Hope you all are fine and doing great. Today we are going to learn a new chapter, that is chapter number 9, tense. Now, students, what is a tense? Tense क्या है? हिंदी में टेंस को काल कहा जाता है. टेंस हमें समय बताता है. It tells us time. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हम कोई सेंटेंस रीड करते हैं और उस सेंटेंस में एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब होता है, तो उस वर्ब के फॉर्म से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो काम या वो एक्शन कब हुआ है. टेंस हमें टाइम ऑफ एक्शन बताते हैं एंड वी नो दैट एक्शन बताने वाले वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं. So depending on the verb, we can tell the tense of a sentence. Now, based on time, we have three kinds of tenses, which are present tense, past tense, and future tense. Today we will learn present tense in detail. Present tense is divided or classified further into four different categories to make it easier for us to understand. प्रेजेंट टेंस का यूज़ 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिससे हम किसी भी सेंटेंस में दिए गए टेंस को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. द 4 कैटेगरीज ऑफ प्रेजेंट टेंस आर सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Let us understand the first kind of present tense, which is simple present tense or present simple. This tense is used to describe an action, habit, or facts that are generally true and occur in the present time. Simple present tense कोई भी एक्शन या हैबिट को डिस्क्राइब करता है जो कि प्रेजेंट टाइम पे हो रही हो और वो ट्रू इवेंट्स या फैक्ट्स हों, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हम चेंज नहीं कर सकते या फिर वो चीज़ें जो हम रेगुलरली करते हैं. द सेंटेंस स्ट्रक्चर इन द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म. सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज़ होगा वो फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होगा, जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आवर सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, दैट इज़ आई, यू, वी और दे, द वर्ब दैट वी विल यूज़ इन सिंपल प्रेजेंट टेंस विल बी इन इट्स फर्स्ट फॉर्म, लाइक वॉक, विजिट, वर्क एंड गो. क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब में यानी कि वॉक, विजिट, वर्क और गो में कोई भी एडिशन नहीं होगी. अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई नाम है, देन द वर्ब यूज्ड विल बी इन प्रेजेंट फॉर्म ओनली, बट वी विल डू एन एडिशन ऑफ एस. So instead of walk, we will write walks, visits, works or goes. Let us see some sentences. I walk to work every morning. Here, I is your subject and walk is your verb, which is without any addition. Anna visits the town center every weekend. यहाँ पे Anna subject है and the verb visit is in the present form having an addition of s. She works as a teaching assistant in the school. Let us see some more uses of present simple. It is used for general truth or permanent activity. जब भी हम किसी जनरल ट्रुथ या परमानेंट एक्टिविटी को डिस्क्राइब करेंगे तो हम वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, the earth moves around the sun. Our subject here is earth and the verb use is moves, which is with an addition s. Earth जो है वो sun के around move करता है. ये एक permanent activity है और एक general truth है जिसे हम change नहीं कर सकते.
The sun rises in the east. 2 and 2 is 4. It is also used for talking about regular or habitual activity, यानी कि ऐसा काम जो हम रेगुलर करते हैं. For example, I get up every day at 5 o'clock. Whenever we are talking about our regular habits, we will use simple present tense. I take tea without sugar. She always helps me. It is also used to show possession और ह्यूमन फीलिंग्स, यानी कि जब भी हमें अपनी किसी पोजेशन या ओनरशिप के बारे में बताना हो या फिर हमारी फीलिंग टूवर्ड्स समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, ही ओन्स अ कार. वी लव आवर कंट्री. आई थिंक ही इज राइट. एक्टिविटी टू बी डन इन नियर फ्यूचर. ऐसी कोई एक्टिविटी जो फ्यूचर में होने वाली है या हम करने वाले हैं. नॉट आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बहुत दिनों के बाद नहीं, बट इन नियर फ्यूचर. इट कैन बी टुमारो और मे बी आफ्टर अ वीक. फॉर एग्जाम्पल, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 10 AM, यानी कि प्लेन 10 बजे टेक ऑफ करने वाला है. सो अभी प्लेन टेक ऑफ नहीं हुआ है. So this is an activity which will happen in future, but we are talking about it because it will happen very soon. So we have used simple present tense. He leaves for London next week. Exclamatory sentence. It is used in exclamatory sentences also. For example, here comes the king. There goes the lion. Our next category is present continuous. Now, from the name itself, students, you all can understand that the action here will be in a continuous form, यानी कि action हो रहा होगा. तो जब भी कोई action चल रहा है और हमें उसके बारे में बात करनी है, so the tense that we will use will be present continuous. Present continuous sentence का structure होता है subject plus is MR plus verb in the ing form. यहाँ पे जो verb हम यूज़ करेंगे वो ing form में होगा और हमारे helping verbs is MR यूज़ होंगे. If our subject is I, we will use am. If our subject is he, she, it or any name, we'll use is. If the subject is we, you, they, we are going to use are along with the verb in ing form. So basically, इसका sentence structure बना subject plus helping verb plus main verb in ing form. For example, it is snowing outside. So here our helping verb used is and the main verb is with ing, that is snowing. I am studying for my exam, यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ. She is eating her lunch. वो खाना या lunch खा रही है, which is showing that the action is going on. Let us see the uses of present continuous tense. It is used for an action going on at the time of speaking. यानी कि जब हम बात कर रहे हैं और उस टाइम पे कोई एक्शन चल रहा है, then the tense will be present continuous. For example, he is singing a song. I am reading a paper. You can see the main verb here is in ing form. Action happening about this time but not at the moment. यानी कि जब हम बात कर रहे हैं तब वो एक्शन नहीं हो रहा है, बट वो एक्शन चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ रीडिंग मैथमेटिक्स दीज डेज. वो आजकल मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, लेकिन अभी नहीं पढ़ रहा. आई एम रीडिंग हैमलेट बट नॉट एट द मोमेंट. यानी कि बोलते वक्त वो एक्शन नहीं हो रही है.
show intention of an activity in future. प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर की एक्टिविटी को भी बताने के लिए यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू प्ले, हम खेलने जाने वाले हैं, या फिर हम खेलने के लिए जा रहे हैं. आई एम गोइंग टू बाय कार. शो वर्क, डिसीजन, प्लान टू बी डन इन फ्यूचर. Present continuous is also used to describe the work or decision that we are going to take in future. For example, she is dancing this evening. The PM is returning tomorrow. I am leaving for Delhi tomorrow. यानी कि कोई भी काम जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं उसे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करके डिस्क्राइब करते हैं. Next we have is present perfect. This tense is used to describe an action that has taken place once or many times before now. यानी कि अभी से पहले ये एक्शन बहुत बार हो चुका है. Sentence structure for present perfect is subject plus have or has plus verb in past participle. विच मीन्स वर्ब जो है वो यहाँ पे अपने थर्ड फॉर्म में होगा. सो फर्स्ट सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब इन इट्स पास्ट फॉर्म विच इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. फॉर हेल्पिंग वर्ब, if our subject is I, we, you or they, we will use have. If the subject is she, he or it, we will use has. Let us see some examples. I have walked to school every day. यानी कि अभी वो नहीं चल रहा है पर वो बहुत बार स्कूल जाने के लिए चल चुका है. They have traveled to China twice. Stacy has worked as a teaching assistant for 3 years now. It is used for activity done in past but it has relation with present. यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में हो चुकी है लेकिन उसका प्रेजेंट से भी रिलेशन है. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ सीन ताजमहल. उसने ताजमहल देखा है इसीलिए वो उसके बारे में बात कर रहा है. राम हैज़ लॉस्ट हिज पेन. आई हैव लर्नड माई लेसन. It is also used for action that started in past and is still being carrying on in present. कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक प्रेजेंट में चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1990. यानी कि हम 1990 से अभी तक इस घर में रह रहे हैं. वी हैव known him for 10 years. Still know each other. यानी कि हम एक दूसरे को पिछले 10 सालों से जानते हैं और अभी भी जान ही रहे हैं. I have been ill since Monday, which means Monday से मेरी तबीयत अभी तक खराब है. Note: for such action that started in past and is continuing in present can be told in both present perfect or perfect continuous. But few sentences have verb which can't be used in continuous tense, so only perfect is to be used. जैसे कि I have lived in this house since 1960. This is a perfect tense. I have been living in this house since 1960. यहाँ पे हमारा जो वर्ब है, मेन वर्ब है, वो ing फॉर्म में है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है. अगर हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में है यानी कि ed एडेड है और वो वर्ब की तीसरी फॉर्म है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है. He has studied for 2 years. You can see the main verb here is in its third form, so it is perfect.
He has been studying, यहाँ पे has के साथ been और ing add है, which means the sentence is in perfect continuous. Next is present perfect continuous. This tense is used to describe an experience or an action that started in the past and is still continuing till the present moment. यानी कि कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है. If we have to describe an action like that, then we use the tense perfect continuous. The structure for this kind of tense is subject plus helping verb has or have been plus the main verb in ing form. अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू या फिर दे है, so we will use helping verb have. If our subject is she, he or it, then we will use has along with the main verb in ing form. For example, I have been studying for 3 hours now. They have been living in the same house since 1999. It has been snowing all morning. ये सारे एक्शंस पास्ट में शुरू हुए और अभी तक चल रहे हैं. It is used for action that started in the past plus it is continuing in the present. For example, he has been sleeping for 2 hours. यानी कि वो 2 घंटे से सो रहा है. अभी नहीं सोया लेकिन पहले से ही सो रहा है अभी तक. I have been reading since 9 o'clock. यानी कि 9 बजे से वो अभी तक पढ़ रहा है. He has been sitting here for 2 hours. Present perfect continuous tense is used for action which started in past, continued for some time and has finished just at the moment. यानी कि कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर तक चला और जस्ट प्रेजेंट यानी कि अभी खत्म हो गया. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड. आई हैव बीन रनिंग अराउंड द टाउन ऑल डे. यानी कि पूरे दिन में शहर का चक्कर लगाकर अब थक गया. समवन हैज़ बीन राइटिंग विथ माई पेन मीन्स कोई मेरे पेन से लिख रहा था और अभी जस्ट नहीं लिख रहा है. यानी कि किसी ने मेरा पेन यूज़ किया, उससे थोड़ी देर लिखा and then the person stopped. He has been teasing her. Now children, remember, for simple present we use the verb in its first form, that is also known as base form, with an addition s depending on the subject. For present continuous we use the main verb in ing form. For present perfect, we use it in the third form along with has or have. For present perfect continuous, हम has और have के साथ been भी use करते हैं और verb का ing form. यानी कि the verb will be with ing. I hope students, you all have understood simple present tense and all its categories well. Kindly read all the notes given in your assignment once and only then start with your exercise. Thank you.